ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 102 of the Ayodhya Kandam, which has 9 verses. Bharata tells Sri Rama that having been deprived of the privilege of serving his elder brother, he will have nothing to do with sovereignty, and requests him to offer water to the spirit of his deceased father, who died with the thought of Sri Rama alone foremost in his mind. And he further implores Sri Rama to get himself consecrated for sovereignty of Ayodhya, as the obsequies of their imperial father having been duly performed by the two brothers Bharata and Shatrughna at Ayodhya. आज हम द्विदिक शतम की सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 9 श्लोक हैं। भरत का पुण्य श्री राम से राज ग्रहण करने का अनुरोध करके उनसे पिता की मृत्यु का समाचार बताना। रामस्य वचनं श्रुत्वा भरतः प्रत्युवाचः किं मे धर्माद् विहीनस्य राजधर्मः करिष्यति। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर भरत ने इस प्रकार उत्तर दिया, भैया मैं राज्य का अधिकारी ना होने के कारण उस राज्य धर्म के अधिकार से रहित हूँ, अतः मेरे लिए यह राजधर्म का उपदेश किस काम आएगा। Hearing the exhortation of Sri Rama, Bharata, it is said, replied as follows: How will the code of conduct prescribed for a king avail me, who stand outside the range of that conduct, disqualified as I am for the sovereignty, being a younger issue of the king emperor? शाश्वतोऽयं सदा धर्मः स्थितो अस्मासु नरऋषभ, ज्येष्ठे पुत्रे स्थिते राजा न कनीयान् भवेन् नृपः। नर श्रेष्ठ, हमारे यहाँ सदा से ही इस शाश्वत धर्म का पालन होता आया है कि ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए छोटा पुत्र राजा नहीं हो सकता। This has ever been the perpetual law amongst us, the Kshatriyas of the Solar dynasty, O jewel among men, that so long as the eldest prince is alive, a younger one can never be king. स समृद्धां मया सार्धम् अयोध्यां गच्छ राघव, अभिषेचय च आत्मानं कुलस्य अस्य भवाय नः। अतः रघुनंदन, आप मेरे साथ समृद्धिशालिनी अयोध्यापुरी को चलिए और हमारे कुल के अभ्युदय के लिए राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए। Therefore, return with me to the affluent city of Ayodhya, O scion of Raghu, and get yourself consecrated for the kingship, for the continuance of this race of ours. राजानं मानुषं प्राहुः देवत्वे सम्मतो मम, यस्य धर्मार्थसहितं वृत्तम् आहुः अमानुषम्। यद्यपि सब लोग राजा को मनुष्य कहते हैं, तथापि मेरे राय में वह देवत्व पर प्रतिष्ठित है, क्योंकि उसके धर्म और अर्थयुक्त आचार को साधारण मनुष्य के लिए असंभवित बताया गया है। The king whom the common people speak of as a human being, and yet whose conduct, which goes hand in hand with righteousness and worldly prosperity, they declare as superhuman, is esteemed by me as verging on divinity. कैकेयस्ते च मयि तु त्वयि च अरण्यम् आश्रिते, धीमान् स्वर्गं गतो राजा यायजूकः सतां मतः। जब मैं कैकेयी देश में था और आप वन में चले आए थे, तब अश्वमेघ आदि यज्ञों के कर्ता और सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित बुद्धिमान महाराजा दशरथ स्वर्ग लोक को चले गए। While I was away to the kingdom of Kaikeya, and you had proceeded to the forest, the sagacious king, who was given to the performance of sacrifices and was esteemed by the virtuous, ascended to heaven.
निष्क्रांत मात्रे भवति सह सीते स लक्ष्मणे दुःख शोगापि भूतस्तु राजा त्रिदिवम् अभ्यगात्। सीता और लक्ष्मण के साथ आपके राज्य से निकलते ही दुख शोक से पीड़ित हुए महाराज स्वर्ग लोक को चल दिए। Accompanied by Sita and Lakshmana, you had just gone out of Ayodhya when, overwhelmed with sorrow and grief, the king departed for heaven. उत्तिष्ठ पुरुषव्याघ्र क्रियताम् उदकं पितुः अहं च अयं च शत्रुघ्नः पूर्वमेव कृतोदकौ। पुरुष सिंह उठिए और पिता को जलांजलि दान कीजिए। मैं और ये शत्रुघ्न दोनों पहले ही उनके लिए जलांजलि दे चुके हैं। Get up, O tiger among men. Let water be offered to the spirit of our deceased father. Shatrughna, standing here, and myself too have already offered water to him. प्रियेण किल दत्तं हि पितृलोकेषु राघव अक्षय्यं भवति इति आहुः भवांश्चैव पितुः प्रियः। रघुनंदन कहते हैं, प्रिय पुत्र का दिया हुआ जल आदि पितृलोक में अक्षय होता है और आप पिता के परम प्रिय पुत्र हैं। For the knowers of truth declare that water offered by a beloved son surely becomes inexhaustible in the realm of the mains, O scion of Raghus, and you are undoubtedly the beloved of my deceased father. त्वामेव शोचस्तव दर्शनेषु त्वय्येव सक्ताम् अनिवर्त्य बुद्धिं त्वया विहीनः तव शोकारुणः त्वां संस्मरेन् एव गतः पिता ते। आपके पिता आपसे विलग होते ही शोक के कारण रुग्ण हो गए और आपके ही शोक में आपको ही देखने की इच्छा रखकर आप में ही लगी हुई बुद्धि को आपकी ओर से ना हटाकर आपका ही स्मरण करते हुए स्वर्ग को चले गए। Bereft of you and stricken with grief caused by separation from you and unable to divert his mind, which was solely attached to you alone, our father departed from this world, grieving only for you, longing for your sight, and fondly remembering you alone. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 2,000 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अश्व रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 102वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 102 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।